Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. This is the new chapter that we need to talk about equilibria. ठीक है ना, equilibria का मैं start करें. कोशिश करिएगा कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज समझ में ना आए, on the spot पूछें. ठीक है ना, accumulate मत कीजिएगा चीजों को कि मैं सर से बाद में पूछ लूंगा, नहीं समझ में आया तो कुछ इस तरह आप जमा मत कीजिएगा, बस फौरन फौरन पूछिएगा ताकि ये क्लियर रहे और फिर हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता रहे. ठीक है, so let's start this with the word reversible reaction. We are going to talk about reversible reaction first, and then we will discuss the rest of the thing of Equilibria chapter, right? Reversible reaction. But what is reversible reaction? If you talk about the chemical reactions, in most of the reactions, the reactants are completely converted to the product. In most of the reaction, you will see this, that all the time, you will see that यार हमने reactant डाला, acid डाला, base डाला, दोनों में मिलाया, salt और water बन गया. All the reactions are going to be converted into product. ठीक है, हमने एसिड डाला, मेटल कार्बोनेट डाला, रिएक्शन हुआ, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, कन्वर्टेड हो गया, कंप्लीट रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में until and unless आपने उसको एक्सेस में यूज किया होता तो वो बच जाता. ठीक है, सेम एज इट इज we have a lot of examples of the equations or chemical reactions in which the reactants are going to be consumed and form products, right? They are completely converted into product, right? And you know that they all reactions are like such reactions that are moving in one direction. They are only moving in one direction. For suppose if you have HCl and if you are adding potassium carbonate into this, so you will see that what potassium chloride form, carbon dioxide form, and water form, right? So such reactions are only one direction reaction. You can see this. They are always moving in one direction, which is forward direction. They are always converting reactants into products only, right? So these reactions are known as irreversible reactions. These type of reactions are known as irreversible reaction, जो कि हमने बहुत पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं. But we have few of them ऐसे भी reaction है हमारे पास in chemistry. We have some of them or few of them ऐसे reactions भी हैं that can be reversed. That can be reversed if you just, for suppose you are altering the conditions of the reactions. They can be reversed, right? They can be reverse more or they can be reversed less if you are changing the conditions, right? So for suppose for this, many of you remember the O-level stuff, that the formation of ammonia. If you talk about formation of ammonia from Haber process, so this is one of the reactions जो कि आपने पिछले सालों में पढ़ा हुआ है, that this is a reversible reaction. We know that whenever you are having hydrogen, you are reacting it with nitrogen, you will have ammonia gas to produce. But this is the gas which is producing right now as a product can be broken down back to the reactants. So this is showing you the reverse form of this reaction, right? The one reaction is you are doing actually the reactants combining together to form a product, but actual product is also breaking down and coming back to the reactants, right? And it's all about conditions, temperature, pressure, concentration, surface area, what you are providing to them for the reaction. अब वो ज़्यादा हो, आगे वाला या बीच वाला ज़्यादा हो, it's not the matter right now. We're just talking about one of the example. And also one of the example is during the formation of sulfuric acid, we have the formation of SO3 over there in contact process, formation of SO3. It is also one of the reaction which is reversible reaction when sulfur dioxide is oxidizing to form sulfur trioxide. So this is also one of the reaction which is right now reversible reaction. So we have a lot of you can say that examples for this, and out of a lot of reactions, chemical reactions, few of them are actually reversible reactions which can be converted back to the reactants. That is actually the matter in this chapter we need to discuss. Okay, bacho, so reversible reaction is going to be discussed in today's class. So you need to know this, that in a reversible reactions, the conditions required for the forward and backward reactions are the same. We don't need to provide them different conditions कि भाई forward reaction कराना है तो मैं जो है ना क्या नाम है वो वाली conditions दूंगा, और backward reaction कराना है तो मैं वो वाली condition दूंगा. Whatever the condition you are providing, it is actually the condition for both of them, right? हाँ, वो बात अलग है कि वो condition जो आप provide कर रहे हैं वो suit किसको कर रही है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉरवर्ड को अलग कंडीशन दो और बैकवर्ड को अलग कंडीशन दो. कंडीशन आप वही दोगे, एक ही कंडीशन दोगे, और वो ओवरऑल प्रोसीजर को, आप ओवरऑल प्रोसेस को आप कंडीशन दे रहे होगे. अब वो दोनों रिएक्शन अंदर हो रहे होंगे, फॉरवर्ड भी हो रहा होगा और बैकवर्ड भी हो रहा होगा. अब ये डिपेंड
करता है उन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की कंडीशंस पे कि वो यार वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सो है, एंडो है, व्हाटएवर, वो गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है उसके अंदर डिपेंड करता है कि उनको क्या सूट कर रहा है, वो फेवर कर भी रही है कंडीशंस या नहीं कर रही, तो उन दोनों में से किसी एक को कर रही होंगी, हो सकता है दोनों को ही कर रही हों, तो व्हाटएवर, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दीस फैक्टर्स, राइट। तो भाई आपने याद रखना है कि आप किसी एक को स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं कर सकते, आपने जो भी टेम्परेचर देना है, जो भी प्रेशर देना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन डालनी है, वो ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। और इन सब से हटकर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस रिएक्शन में होती है वो होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। This is the main thing that we need to discuss in these chapters, which is dynamic equilibrium. ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन टॉपिक के लिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, now what is this? In simple words, many of the time students knows this is a balance, right? Many of the times you can consider this is a balance. This is a good thing to remember. This is a balance sometime, right? So which type of balance is this? For suppose just look at over here. For suppose you have a beaker, right? This is a beaker, and you need to keep remember whenever you are doing a reversible reactions, try to keep this container closed so the gases cannot escape. Many of the time reversible reactions, almost 98% to 99% are based on gases, so you need to keep remember that, okay, by you should have closed containers, you should have closed containers, right? So the closed container avoid the escaping of gases, right? So closed container का मकसद क्या है हमारा? So the gases cannot escape. Gases cannot escape, right? Then for suppose हुआ कि आपके पास you just take hydrogen over there as a gas for the reaction. You just add hydrogen gas in the container. This is the hydrogen gas you're trying to add over there for the reaction. You just add a hydrogen reactant over here, then you add nitrogen gas for the reaction, and you are just trying to make ammonia gas in the container, and then when they start reacting together, an ammonia gas start forming, right? And as all of these are together, so they can be considered as gaseous mixture. जब ये सब एक साथ होंगी एक ही जगह पर, तो ये कंसीडर करा जाएगा gaseous mixture. इसको आप क्या बोलोगे? This is gaseous mixture, ठीक है ना। अभी फिलहाल गैसेस है तो मैं इसलिए इसको गैसियस मिक्सचर कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी आप इसको नाम दे सकते हैं, एक और नाम है इसका, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं डिफाइन करना चाह रहा वो नाम, आगे जाके हम इसको बताते हैं कि एक और नाम क्या हो सकता है इसका, ठीक है। अब देखें, फॉर सपोज राइट नाउ यू जस्ट ऐड दीज टू गैसेस ओवर देयर ना। आपने क्या ऐड किया भैया? आपने हाइड्रोजन ऐड किया और आपने क्या ऐड किया? नाइट्रोजन ऐड किया, राइट। यू जस्ट ऐड 3 hydrogen molecules versus 1 molecule of so nitrogen. अब वो आपने उस हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से बहुत सारा ऐड कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या? you want this कि भाई क्या बने आपके पास? अमोनिया गैस बने, and this is the relation कि भाई अगर आप 3:1 का रिलेशन मिलाते हैं तो ये आपके पास 2 moles of ammonia gas बनेंगे, and this is known as what? Forward reaction. This is known as forward reaction. This is what you want to do, but once it start forming, so it start breaking down as well, which is the reverse reaction, ठीक है ना। और ये इस रिएक्शन की एबिलिटी है, इसलिए ये हो रहा है रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है भाई, इसलिए ये हो रहा है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा देखिए, अब इनिशियली आपने सिर्फ रिएक्टेंट डाले थे, प्रोडक्ट आपके पास नहीं थी। इनिशियली यू जस्ट हैव रिएक्टेंट्स, आपने सिर्फ रिएक्टेंट्स डाले थे, प्रोडक्ट आपके पास नहीं थी, ठीक है ना। तो यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड ऑफ रिएक्टेंट्स, so they are just colliding each other with a greater frequency and producing more products. So the initially rate of forward reaction is fastest. You can say that initially this forward reactions rate is fastest, right? Initially forward reaction is faster, or you can say that fastest, right? And as we don't have product initially, the reverse reaction is initially it is slower, right? But we know that आहिस्ता आहिस्ता आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दिस फास्टर रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लोअर, ठीक है ना। एंड दिस स्लोअर रिएक्शन, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट बढ़ रही है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फास्टर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो वाला फास्टर की तरफ जा रहा है और फास्टर वाला स्लो की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर वुड बी वन पॉइंट वेयर द रेट ऑफ बोथ द स्टेप्स गोइंग टू बी सेम। एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा
जहां पर दोनों स्टेप है, फॉरवर्ड स्टेप और बैकवर्ड जो स्टेप है, इन दोनों का जो स्पीड है वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन बिकम सेम, और वो पॉइंट आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है ना। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, व्हाट इज द थिंग यू नीड टू कीप रिमेंबर भाई, दैट व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन, यू कैन से दैट व्हेन द rate of forward reaction, when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, to the rate of backward reaction। अब आप ये लोग याद रखें इस बात को कि अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम फॉर 1 मार्क, तो आप याद रखें आपने रेट का लफ्ज इस्तेमाल लाजमी करना। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द rate of when the forward reaction become equal to the backward reaction, so this is wrong statement, the equations are not going to be same, right? आपको याद रखना है उनकी speeds are going to be same, right? So keep remember, if you are not using the word rate in the statement, then you won't get a mark for that, ठीक है ना। हम लोग आमतौर पर इसको बैलेंस समझते हैं और बैलेंस समझकर हम इसमें रेट की बात नहीं करते हैं, तो आपने याद रखना है भाई स्पीड सेम हो रही है यहाँ पर रिएक्शन से, ठीक है ना। जब आपके पास स्पीड सेम हो रही है, इस वजह से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास अचीव हो रहा है। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। Yes, sir. You need to say that when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, ठीक है। And if they are asking for 2 marks, you need to add one more point over here, and that point is there would no more change in concentration. There would be no more change in concentrations of reactants and product. There would be no more change in concentrations of reactants and product. Once the equilibrium has been achieved, then there would be no more change in the concentration of reactant and product. अब आपने याद रखना है कि अब जो भी concentration है, I'm not saying कि दोनों की concentration same है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मैं ये कह रहा हूं कि वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन, अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन इट वुड बी नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। अब ये चेंज नहीं होगी, बस आपने याद रखना है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, यही रहेगी, बट सेम नहीं है, दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, ये आपने याद रखनी है। कम ज्यादा हो सकती है लेकिन सेम नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर सपोज इफ जस्ट लुक एट ओवर हियर, कि अब आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ये 3 मोल्स हाइड्रोजन के मिलते हैं नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ, और आपके पास क्या बनाते हैं 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्योंकि इसकी स्पीड और बैकवर्ड वाले की स्पीड सेम है, तो 2 मोल्स टूट कर आपके पास वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बना लेंगे, फिर ये 2 मिलकर आपके पास ये बनाएंगे, फिर 2 बन जाएंगे, फिर 2 टूट कर ये बना लेंगे, तो ये दोनों रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। और अब जो भी आपके पास कंसंट्रेशन बन गई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो फर्दर चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. So these are actually characteristics. These are actually characteristics that you need to keep remember भाई, क्या characteristics हैं आपके पास जो कि आपको याद रखनी है। characteristics ये हैं when the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction, ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप लोग नहीं करते हो लिखते वक्त आंसर, इसलिए आप जरा गौर से लिख लेना, और जो भी आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख रहे हो उसको हाईलाइट कर लेना भाई, रेट मत भूलना है हमें, ठीक है। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ द कांस्टिट्यूएंट एट इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आई जस्ट राइट इट इन दिस वे कि आपको आसान लगे। There would be no more change in the concentration of reactants and product with respect to time, ठीक है ना, with respect to time। You can even write the time factor over there as well, and you also need to remember this one more thing that you need to keep remember by equilibrium is a dynamic state, right? You can say that opposing changes at the molecular level are continually taking place, right? It means the reaction never stops, it never stops। ये रिएक्शन आपके पास चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो रिएक्शन खत्म, स्टॉप, अब नहीं होगा आगे, ऐसा नहीं है।
डेफिनेटली उनकी कॉन्सेंट्रेशन फर्दर चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है तो एक बैकवर्ड हो रहा है, एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है एक बैकवर्ड हो रहा है, they are going to be continuously in motion, right? So you need to keep remember the reaction never stops. This reaction never stops. You can say that equilibrium is a dynamic state. Equilibrium is a dynamic state. It is a dynamic state. You need to keep remember on the molecular level, right? So you can say that posing changes at molecular level are continually taking place. Right, bachcho? So these are the three, you can say that characteristics of equilibrium that you need to keep remember in many of the questions, and many time consistent part of exam. They most of the time ask for the definition, the characteristics of equilibrium for 2 marks. So you need to keep remember first 2 marks, right? And then you can even learn the third marks as well if they ask for 3 marks, right? Many of the time you will see that they ask for 2 marks, right, bachcho? सर ये रिएक्शन स्टॉप कब होगा? ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बेटे, ये चलता रहता है, ठीक है? ओके ठीक है भाई, आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई आपके पास जो इक्विलिब्रियम है, अब ये फॉर सपोज बैलेंस क्रिएट हो गया, आप समझ रहे हैं कि एक तरह का बैलेंस क्रिएट हो गया. अब देयर इज नो मोर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड नो मोर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर सपोज ये आधे आधे नहीं होते हैं, जो भी होते हैं उनके अपने अपने, जैसे फॉर सपोज अभी यहाँ पे आपके पास ये कंटिन्यू लेते हैं हम, ये हाइड्रोजन गैस है, फॉर सपोज ये नाइट्रोजन गैस के साथ मिल रही है और आपके पास क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है, ठीक है? फॉर सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द दिस वन एज एन एग्जांपल. अब देखिए, you can see this is gaseous, and this is also gaseous. So we know that the mole ratio and the volume ratio is same. So I'm just considering this example in the form of volume. So बच्चों अगर इसका रेशियो 3:1 है तो मैं 3:1 के रेशियो में इनका वॉल्यूम्स ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो फॉर सपोज एक कोई बंदा है, उसने 3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस ली है, ठीक है ना, और 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस ली है, ठीक है ना, 3:1 के रेशियो में. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हाउ मच there would be ammonia, बच्चों? There would be 2 decimeter cube ammonia in the product, right? When they just mix these two, right or not? बननी चाहिए. Yes, बच्चों, according to the equation, अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो अगर आपके पास 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन हो तो इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो आपके पास 2 मोल अमोनिया के बनने चाहिए. Is that right or not? Yes, sir. तो अगर मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में कंसीडर करूं तो ये इतना बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो देयर वुड बी डायनामिक इक्विलिब्रियम टू अचीव. तो उसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रही होगी वो टूटेगी. तो फॉर सपोज इफ आई एम कंसीडरिंग दिस कि यार ये हाफ हुआ होगा रिएक्शन ना, हाफ प्रोडक्ट वापस टूटकर कन्वर्ट हो गई होगी रिएक्टेंट में, जस्ट कंसीडरिंग हाफ हुआ होगा, हो सकता है कुछ और हुआ हो, लेकिन मैं हाफ कंसीडर कर रहा हूँ. तो भाई ये 2 डेसीमीटर की जगह हमें कितनी मिली? 1 डेसीमीटर क्यूब. हमें मिलनी 2 डेसीमीटर क्यूब चाहिए थी. अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता तो 2 डेसीमीटर क्यूब बनती है हमारे पास, लेकिन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ब्रेकन डाउन, और वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें हाफ मिली, राइट? इट इज जस्ट इमेजिनरी, ठीक है ना? 100% हाफ नहीं होती, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है? सो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया होगा आपके पास, तो दिस इज द व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास प्रोडक्ट, जो कि फर्दर चेंज नहीं हो रही होगी. 99 होगी, 999 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी, फिर वापस 100 हो जाएगी. तो एक बार कम, एक बार ज्यादा कम होती जाएगी, लेकिन इसके आगे पीछे घूम रही होगी, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है ना? यही होता रहेगा, ठीक है? अब एक कॉमन मैन जो ये चाहेगा कि अगर वो यार फॉर सपोज अमोनिया की इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, फॉर सपोज मैंने सोचा कि यार मैं अमोनिया की इंडस्ट्री लगाऊं. अगर मैं अमोनिया की इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो कॉमन मैन इंसान यही चाहेगा ना यार कि यार भाई उसकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्ट उसकी ज्यादा से ज्यादा बने. जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी उतनी ज्यादा वो प्रोडक्ट बेचेगा, जितनी ज्यादा वो प्रोडक्ट बेचेगा उतना ज्यादा उसको मुनाफा होगा. एक कॉमन इंसान यही चाहता है, ठीक है ना? तो अगर फॉर सपोज
मेरा बिल्कुल बेसिक रूल क्या होगा अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ाना चाहूँ, अब मैंने 3 और 1 मिलाया था, तो मैं चाहता था कि 2 डेसीमीटर क्यूब बन जाए, मेरा ऑर्डर 2 डेसीमीटर क्यूब का लगा हुआ था। अब जो बंदा मुझसे लेने आया है अमोनिया गैस, तो मैंने निकाली है तो 1 डेसीमीटर क्यूब निकली है। सो इट वुड बी लाइक दैट, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो 2 डेसीमीटर क्यूब देनी है, वो बंदा मेरे सर पे खड़ा हुआ मुझसे मांग रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पांव फूल गए। आई डोंट नो, इवन आई एम अ लेस केमिस्ट फॉर सपोज ना, मुझे नहीं पता यार ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बस मुझे ये पता था मैं इन दोनों को मिलाऊंगा इतना बच जाएगा। मुझे स्टेशोमेट्रिक रिलेशंस आते थे, मैंने कर लिया, लेकिन स्टेशोमेट्रिक रिलेशन मेरे पास गलत निकल गया, अब मैं क्या करूँ। सिंपल इज दिस, कोई भी एक आम इंसान जिसको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती होगी, वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार मैं 3:1 मिलाया, डबल बनना चाहिए था, आधा बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, मैं 6 को डबल कर देता हूँ, मैं 1 को डबल कर देता हूँ, तो चलो 4 बनना चाहिए, 4 डेसीमीटर क्यूब आपके पास अमोनिया गैस बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा, तो हाफ तो बनेगा ही ना, तो इन द फॉर्म ऑफ हाफ भी तो ये इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान जो ये सोचेगा कि यार अभी मेरे पास कम बना है, ज्यादा बना है, जो भी है, अभी तो मेरे पास कस्टमर खड़ा है, मुझे इसको देना है हाथ के हाथ ना, तो वो जल्दी से क्या करेगा, जितना भी अमाउंट उसने डाला होगा पहले उसको डबल कर देगा, तो उसका अमाउंट खुद खुद ही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट का अमाउंट भी डबल हो जाएगा। इनफैक्ट ये हाफ है अभी भी, लेकिन क्योंकि आपने रिएक्टेंट्स बढ़ाए तो आपके पास प्रोडक्ट भी बढ़ गई है, उसके हाफ अमाउंट बढ़ गया है। और सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास जो है 20 रुपए है और उसमें से हाफ आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका मतलब आप 10 रुपीज यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको 100 रुपए दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप हाफ इस्तेमाल कर सकते हो, अभी भी है इस्तेमाल तो आप हाफ ही कर सकते हो, बट वो जो हाफ है उसका कंटेंट बढ़ गया, अब आप 50 रुपीज यूज कर सकते हो। सेम एज इट इज, रिएक्शन तो अभी भी हाफ ही हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने आपने क्या बढ़ा दिया, रिएक्टेंट्स का अमाउंट बढ़ा दिया, तो जो उसका हाफ था प्रोडक्ट है वो हाफ बढ़ गया, ठीक है ना। So the first thing that you need to keep remember why which the equilibrium can be disturbed is the concentration. So you need to keep remember this, if you are adding the concentration, if you are adding the concentration of reactants, so it would increase the concentration of product, and if you are adding the concentration of product, so it would increase the concentration of reactants. You just need to remember this rule कि भाई आपके पास for suppose एक क्या है, बैलेंस है, for suppose आपके पास ये बैलेंस है, ये बैलेंस आपने क्रिएट कर दिया है, और आपके पास क्या हो गया, आपने 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन यहाँ डाले थे, और यहाँ पर आपके पास 2 अमोनिया गैस बनने चाहिए थे। तो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इट इज जस्ट लाइक एन इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस है ये अब यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो गया। तो अगर आप इसको ऐड करोगे सो इट वुड बी हैवियर, आप इसको अगर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हैवियर। जब आप हैवियर को ऐड करोगे तो इट वुड मूव टुवर्ड्स लाइटर वन, अब वो लाइटर वन की तरफ जाएगा और दोबारा से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इफ यू आर एडिंग हाइड्रोजन तो रिएक्शन जाएगा अमोनिया की तरफ, खुद ब खुद इक्विलिब्रियम अमोनिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इफ यू आर एडिंग नाइट्रोजन तो रिएक्शन खुद ब खुद लाइटर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स अमोनिया। हाँ, अगर आप अमोनिया ऐड करते हो तो ये हैवियर हो जाएगा, द रिएक्शन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दीस टू, राइट बच्चों। और आपने याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों को डबल करूं, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन भी बढ़ाऊंगा तब भी मेरे पास अमोनिया बढ़ेगी, लेकिन उसका रिलेशन लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी मैं जब वो सिखा दूंगा तो आपको पता आ जाएगा, इसलिए मैं अभी उसमें लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है बच्चों। Yes, sir. So you need to keep remember thing that increase in concentration, increase in concentration of reactants, increase in concentration of reactants shift the equilibrium, shift the equilibrium। आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि आप रिएक्टेंट्स बढ़ा रहे हो तो लाइटर साइड प्रोडक्ट हो जाएगी, तो इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है बच्चों। आप इसको प्रोडक्ट साइड लिख सकते हो, आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हो, आप इसको राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, एनी वन ऑफ देम, आप इसमें से कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट बच्चों? जी sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। दूसरा ये कि इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर टू बैलेंस द एडिशनल रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। यू कैन से दैट टू बैलेंस द एडिशनल रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो एडिशनल रिएक्टेंट्स आपने ऐड किए ताकि वो प्रोडक्ट और उनका बैलेंस क्रिएट हो जाए, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, और इसका ही उल्टा लिख लगे, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इसको। इफ यू आर एडिंग व्हाट, इफ यू आर एडिंग प्रोडक्ट सो द रिएक्शन मूव बैकवर्ड इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना, ताकि आपके पास वो जो आपने एडिशनल उसके अंदर जो भी ऐड किया है वो बराबर हो सके। क्लियर बच्चों?
Yes, sir. इसी तरह आपके पास एक टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है जो कि आपको याद रखना है। टेम्परेचर का फैक्टर क्या होता है? अब टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो भी आपके इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। डिस्टर्ब का मतलब ये आर्ग्यूज नहीं है कि तोड़ फोड़ देगा भाई। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड जा सकता है, इन दो के अलावा कहीं नहीं जा सकता। अब इसके लिए आपने याद रखना है, वी जस्ट हैव टू कंडीशंस फॉर दिस, वन इज एक्सोथर्मिक एंड वन इज एंडोथर्मिक। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या फर्क है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है। दे हीट एनर्जी रिलीज टू द सराउंडिंग। तो ये वो रिएक्शन है जो ऑलरेडी हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को एनर्जी देने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर आप उसको हीट दोगे ना तो ये बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। हमें ये नहीं करना। स्लो, सॉरी मैंने स्लो बोल दिया, स्लो नहीं होगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बैकवर्ड वाला बढ़ जाएगा। तो हीट एनर्जी इसमें क्या होती है भाई? दूसरे वाले में हीट एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होती है, ठीक है भाई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जिनको चाहिए हीट एनर्जी, इनको देनी चाहिए ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने। लेकिन मैं आपको दोबारा से उसी कंडीशन में समझाऊंगा जो मैंने अभी आपको बताई है। दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड। अब देखें, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो दीज आर द रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी इज एक्चुअली वन ऑफ द प्रोडक्ट इन दीज रिएक्शंस। तो अगर इस रिएक्शन में आप एनर्जी बढ़ा दो, अगर फॉर सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी के अंदर आप हीटिंग कर रहे हो, उस रिएक्शन को फर्दर हीट कर रहे हो, यू कैन सी दिस व्हाट यू आर डूइंग। You can see this in the balance. You are actually increasing the product. If you are increasing the product, so the reaction moves backward. ये lighter side की तरफ चला जाएगा। जब ये lighter side की तरफ चला जाएगा तो आपके पास reactants बनना शुरू हो जाएंगे। We don't want कि भाई हमारे पास reactants बने। We want कि हमारी product increase हो। Sir, I can't hear you. Yes, बच्चे, can you hear me? Yes, sir.
Okay, sorry for the disturbance. यहाँ कुछ मेरा Zoom जो है मेरे ख्याल से वो अपडेट हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ है. चलें, I am going to share this and let me know is that visible for you or not. Screen आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Correct. You can see this over here. आप लोगों ने कहाँ तक सुन लिया था बच्चों? सर जो आपने शुरू ये किया था second लो one लिखा है। टेम्परेचर. चलो कोई मसला नहीं है, मैं इसको दोबारा से आपको करा देता हूँ. जस्ट लुक एट ओवर हियर. देखें, आपके पास जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें इस तरह की आपके पास कहानी होती है. जस्ट यू कैन बैलेंस द इक्विलिब्रियम लाइक दिस. यू नो दैट रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है ना. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज लाइक दैट व्हेन दे start reacting with reactants reacting together and they are forming products. So in heat energy releases, which is one of the main product of exothermic reactions. So I can write like this and just you just need to look at over here. भाई अगर मैं ऐसे reactions में temperature increase करूं, अगर मैं ऐसे reactions में temperature increase करूं, so actually I am increasing the product. And when you are increasing the product, so the reaction start moving backward. जो lighter side है वो उस तरफ चला जाएगा. तो लाइटर साइड रिएक्टेंट है, तो अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना. हाँ, अगर आप इसमें टेम्परेचर कम कर दो तो इट मींस यू आर डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट. if you are decreasing the product, so the product side is going to be lighter and then reactants are start converting back to the product. So this is one of the way you can understand कि अब मैं इस तरह product अपनी increase कर सकता हूँ. If you want to increase the product, so the low temperature is the best factor in exothermic reaction to increase the product. So you need to keep remember low temperatures favors the exothermic reactions and decrease in temperature shifts the equilibrium towards right hand side. You can even say that product side. You can even say that in forward direction. और अगर आप इसका उल्टा करते हो, if you are increasing the temperature, so you can see this, the reaction is moving towards reactant side and the product is going to be decreased, right? Right, बच्चों? Yes, sir. Then in the next one, just look at over here in endothermic reactions. In endothermic reactions, you can see this. I'm just writing the equation in this way that reactants having absorbing heat energy and forming products. So you can say that absorbing heat is one of the reactant in endothermic reactions. So in the form of endothermic reactions, if you are increasing temperatures, so you are actually increasing reactants. So this is the perfect way of the temperature. You can increase the temperature. This is one of the reactant, and then reactants start converting into products, right? This is the best way you need to understand. यार ये बेहतरीन फैक्टर है. एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा दो. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा. तो ये दोनों चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं, ठीक है ना. इट इवन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. यील्ड भी बढ़ा रहा है आपके पास जो है क्या नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा रहा है. तो दिस इज समथिंग वेरी गुड. So you can say that high temperature favors the endothermic reactions, increase in temperature increase the yield, or you can say that increase in temperature shifts the equilibrium towards right hand side. और इसका उल्टा लिखें, अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों. जी सर. उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है हमारे लिए, और वो क्या होता है भाई, प्रेशर. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस भाई, प्रेशर इज ओनली फॉर गैसेस. क्योंकि आपके पास जो गैसेस होती हैं वो आपके पास होती हैं दे आर कंप्रेसिबल. सो प्रेशर कैन वर्क ऑन दैट, राइट. तो आप उनके ऊपर काम कर सकता है प्रेशर. तो देखिए इसके लिए आपको याद रखना है, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स the equilibrium towards less number of moles. Shift the equilibrium towards less number of moles. ये आपने याद रखना है, towards less number of moles. ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन ये उल्टी है थोड़ी सी ना. प्रेशर बढ़ा रहे हो तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा. याद रखने में आसान है. क्या करेंगे आप, जैसे फॉर सपोज इफ यू हैव दिस इक्वेशन, यू कैन सी दिस हाइड्रोजन, 3 moles of hydrogen reacting with 1 mole of nitrogen and producing 2 moles of ammonia. Just look at over here, how many moles of hydrogen we have. We have 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen. So you can see this,
we have 4 moles on the reactant side, and on the product side we have 2 moles. So in such equations, if you are applying pressure, so the reaction will move towards forward direction because they are less number of moles. So whenever we have less number of moles, we have less number of gaseous moles in the product side in reversible reactions, so we increase pressure, right? So you can say that equilibrium shifts forward in this situation, right? Or product would increase. For suppose you have this one, SO2 reacting with O2 and giving you 2 SO3. So again, you can see this. We have 2 moles of SO2 and 1 mole of SO3. So total we have 3 moles right now on the reactant side, and on the product side we have 2 moles. So you can say that the number of moles on the product sides are lesser and the reaction is reversible as well, and all reactants are gaseous as well. So all 3 conditions you can say that are fulfilling over here. You can say that low or less number of moles, at product side, ठीक है ना? Number 1 is all are gaseous as well, ठीक है ना? Gaseous भी हैं, ये भी follow हो रहा है, ठीक है ना? So you can say that भाई क्या करेंगे हम, इसका pressure increase कर देंगे. So if you increase the pressure, so reaction will move towards forward side. Less number of moles भी हैं और gaseous भी हैं. So you can increase the pressure, it will shift the equilibrium towards right hand side. Okay बच्चों? Yes. For suppose you have greater number of moles on the product side. So what we need to do in such situations, you can see this. हमें तो product ही बढ़ानी है ना भाई, और यहाँ 2 moles है और यहाँ 1 mole है, तो भाई greater number of moles आ गया product की तरफ. अब हम pressure नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम pressure बढ़ा देंगे तो reaction backward चला जाएगा, reactants बनना शुरू हो जाएंगे. We don't want कि भाई reactants बने, तो हम क्या करेंगे, अब pressure इस situation में कम करेंगे. You need to keep remember, if you have a greater number of moles at the product side and the reaction is reversible and you have gaseous mole over there, so you need to keep remember कि भाई आपने जो pressure है उसको कम करना है, otherwise reaction less number of moles की तरफ जाएगा. So you can say that decrease in pressure shift the equilibrium towards greater number of moles, right बच्चों? Towards greater number of moles. Is that right? Right, Bacho? Yes, sir. Yes. And we have one more factor over here. For suppose if we have same number of moles on both sides, just look at over here. This is 1 plus 1, 2. This is 2. If the number of moles are same on both sides, then there would be no effect of pressure on these type of reversible reactions. So keep remember this. If the number of moles are same, so there is no effect or pressure, right? If the number of gaseous moles are same, then there is no effect. You can say that no effect on equilibrium, of pressure. Pressure का आप कोई effect नहीं है, सही है? Pressure has no effect on equilibrium. ठीक है बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Then we have one more factor that to be discussed is catalyst. Catalyst is also one of the factors that we need to talk about, but you need to keep remember catalyst only. You can say that it only speeds up the reaction. It speeds up the reaction. ये क्या करता है भाई? ये आपके पास reaction को speed up करता है, rate of reaction को speed up करता है, forward reaction हो या backward reaction हो, वो दोनों को speed up कर देगा, ठीक है ना? But has no effect on equilibrium. Equilibrium पर इसका कोई effect नहीं है, and also you need to keep remember and has no effect on yield as well. Productivity में भी इसका कोई काम नहीं है. It just only speeds up the reaction by lowering the activation energy. ये lowering करता है activation energy को कम करता है, lowering the activation energy, और आपके पास क्या कर देता है, speeds up कर देता है reaction को. अब वो कोई सा भी reaction हो, forward हो या backward reaction हो, उसको speed up कर देता है, but there is no effect on the position of equilibrium and also the yield of the reaction. Right बच्चों? Yes, sir.
अब ये सारे रिएक्शंस की स्टेटमेंट्स मैंने आपको अपने पास से लिख के दिखा दी हैं। फॉर सपोज आपके पास एक ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो चलो इसी की बात करते हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है आपके पास। तो अगर ये रिएक्शन आपके पास है, यहाँ पर बराबर में लिखा हुआ है कि भाई इसकी एंथैल्पी चेंज है 349 किलोजूल्स पर मोल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप देख रहे हैं, और ये इसके अंदर आपके पास गैसेस हैं सारी, ये भी आप देख रहे हैं, आप गैसियस मिक्सचर है आपके पास, आप एंथैल्पी चेंज भी देख रहे हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब आपको एक इंडस्ट्री में रखा गया है और आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये हम ये फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया की, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेस हैं, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसेस है, इसका जो एंथैल्पी चेंज है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आपके सामने है, ये सब आपको निकाल के दिखा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट कम बन रही है, मैं प्रोडक्ट बना देंगे नहीं, क्या करूं? So now you need to know all the things, all the factors that you can discuss with them. You can say that yes sir, एक काम हम ये कर सकते हैं that we can increase the ammonia by increasing the concentration of hydrogen. You can increase the concentration of hydrogen, it would definitely increase the ammonia. You can even say that sir, we can do one more thing, we can even increase the concentration of nitrogen. We can even increase the concentration of nitrogen, definitely it would have it would have an impact on the productivity of ammonia because it is a reversible reaction. Or sir, you can do one more thing, you can even withdrawal of ammonia form. जो अमोनिया बनती जाए उसको आप निकालते जाएं, उससे रिएक्टेंट्स जो है आपके पास हैवियर होते जाएंगे, प्रोडक्ट साइड लाइटर होती जाएगी, तो they would convert it into more product, right? You can do this even, and you can say that the reaction is exothermic, or you can say that whenever the reaction is exothermic, you can see this when the enthalpy change is showing that the reaction is exothermic, the all meaning of this is that the forward reaction is exothermic and the backward is endo. So you can say that sir, forward reaction is exo, so definitely we required less temperature over here. So you can say that what sir, decrease temperature. अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे so it would produce more product. लेकिन हम बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं करेंगे, क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप समझ लें कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, और इंडस्ट्री में टाइम की ज्यादा अहमियत होती है। तो ठीक है, थोड़ी सी प्रोडक्ट कम बने लेकिन जल्दी बने, ठीक है ना? तो हमें इतना भी कम टेम्परेचर नहीं कर देना कि 0 पे ले आए और प्रोडक्ट जो है ना 100% हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? प्रोडक्ट भले से 60-70% चलेगी लेकिन प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए। And then you can say that sir, we can even add pressure over there, we can increase pressure over there, so by increasing the pressure it's definitely impact on the product, it would increase the productivity. Is that all right every one of you? We have 5 different conditions to increase the product of the reversible reactions. Got it बच्चों? सर आप ये थर्ड पॉइंट दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, जो प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को आप विथड्रॉ कर लो, उसको निकाल लो, तो जो आपकी प्रोडक्ट साइड होगी उसका जो वेट होगा वो लाइटर हो जाएगा। एंड यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर, जो भी लाइटर साइड होगी, बैलेंस जब दोबारा से क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम जब दोबारा से क्रिएट होगा, तो जो हैवियर साइड है वो लाइटर साइड की तरफ मूव करेगी ताकि दोनों साइडें इक्वल हो जाए, ठीक है? ओके सर। Yes, every one of you, is everything is clear? Now we have one more reaction over here. If you just focus over there, that it would be nitrogen N2O4 is going to be converted into nitrogen dioxide, and this would be the reaction like this. And for suppose the enthalpy change of this reaction is plus 49 kilojoules per mole, right? So if this reaction is over there, so you can say that sir, मैं क्या कर सकता हूँ? We can increase the concentration of N2O4. Increase the concentration of N2O4. You can even say that sir, decrease or withdraw the arrow to form. Withdraw NO2, right? And you can even say that the reaction is endothermic, forward reaction is endothermic, so increase temperature, it favors the endothermic reactions, increase temperature, and as the number of moles on the product sides are greater, so you need to decrease pressure, right bacho? So these are the things that you need to keep remember. And also you can use catalyst, but there is no effect of catalyst on the yield. There is no effect of the catalyst on the position of equilibrium, that it shifts it towards product side or the reactant side. It only speeds up the reaction, and definitely it speeds up both of the type of reactions, right bacho?
All right, every one of you. Yes, sir. Any problem, any questions that you want to ask, you are free to ask. किसी भी तरह की कोई भी बात है तो आप उससे पूछ